अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आप सब लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल जनरल साइंस में। तो जनरल साइंस में हमने 3 वीडियोस बना चुके हैं और ये हमारी चौथी वीडियो है। आज के इस टाइम की, इस दिन की ये चौथी वीडियो है और चौथी वीडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, तो ये कुछ की पॉइंट्स है। यू विल लर्न, ये चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर दौरान पढ़ेंगे। ये देख लें, ये कुछ शराब की बोतल है, अल्कोहल है मेरे ख्याल से। डू यू नीड टू शेक द ग्लास ऑफ हिज ड्रिंक बिफोर ड्रिंकिंग इट? वाई सी, वाई डू यू शेक अ बोतल ऑफ वाइनगर एंड ऑयल सलाद ड्रेसिंग बिफोर यू यूज इट? व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टॉप शेकिंग इट? अच्छा, डायरेक्ट आ जाते। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते। सॉल्यूशन इज द मिक्सचर इन विच इट्स कंपोनेंट्स आर इवनली मिक्स्ड। A solution is formed when one or more solutes dissolved in a solvent. The solute is the substance that dissolves. The solvent is the substance that the solute or solutes dissolves, disappear in solvent. It forms the bulk of the solutions. In a sugar solution, sugar is the solute and water is the solvent. Can you name the solute and the solvent in each solution contained in the beakers above? The most common types of solutions that we are more familiar with are those in which a solid, a liquid, or a gas dissolves in a liquid solvent. However, there are many solutions which are formed by dissolving a solid in another solid, a gas in another gas, or by other combination of the 3 physical states. सॉलिड, लिक्विड, अच्छा एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ सॉल्यूड, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। वन साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट डिजोल्व इन वाटर। एमागाम, टिन, गोल्ड और कॉपर डिजोल्व इन मर्क्यूरी। लिक्विड, लिक्विड। अल्कोहल ड्रिंक्स, अल्कोहल डिजोल्व इन वाटर। Glass, liquid. Fizzy drinks, carbon dioxide dissolved in water. Sea and river water, oxygen dissolved in water. Gas, gas. Air, oxygen, carbon dioxide, noble gases dissolved in nitrogen. Solid, solid. Brass, zinc dissolved in a copper. Bronze, tin solid in a copper. आगे पढ़ते हैं, सस्पेंशन को पढ़ते हैं। यहाँ पे सस्पेंशन क्या है? द मिक्सचर इन विच स्मॉल सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और अ गैस. फॉर एग्जाम्पल, chalk is insoluble in water, thus a mixture of chalk and water forms a suspension. Other examples of suspension are calamine lotion and some medicines. A suspension is usually cloudly and heterogeneous. The insoluble particles in a suspension are big enough to prevent light from passing through the suspension. When a suspension is left to send for some time, the particles will still to the bottom. The particles are also too big to pass through filter paper. Hence, they are left behind as a residue when a suspension is filtered. The nature of suspension will be investigated experimentally by doing some laboratory tests described in your practical book. Strength of solutions. A dilute or weak solution contains a small amount of solute dissolved in a large amount of solvent. If a large amount of solute is dissolved in a small amount of solvent, the solution formed in a concentrate or a strong solution. The number of dissolved solute particles in a concentrated solution is more than that in a dilute solution of equal volume. How is more than that in a dilute solution of equal volume? How can you make a dilute solution more concentrated and a concentrated solution more dilute? If some salt is added to 100 grams of water in a beaker and then stirred, it will dissolve in the water. If more salt is added into the beaker
of water and stirred, there will be a time when the salt will be dissolved. Any more saturated solutions of salt in water is obtained. A saturated solution is one of the contains the maximum amount of dissolved solute in a given volume of solvent at a particular temperature in the presence of excess or undissolved solute.